आपने अपना जो आपके पास जो कैश इन हैंड होता है या आपके पास जो सरप्लस मनी होती है आपने उसको राउट करना होता है, ठीक है। कई दफा इंटरिम डिविडेंड्स पे करने के बाद कंपनीज यूजुअली ये करती हैं कि मिड ऑफ द ईयर के अंदर ये फोरकास्ट करते हुए कि आने वाले टाइम में ऑयल एंड गैस में ये बहुत एक कॉमन ट्रेंड है, आने वाले टाइम में ये फोरकास्ट कर रही होती हैं, कंपनीज देख रही होती हैं कि यार बड़े मैसिव किस्म के इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए हमें गेन्स आ रहे हैं और हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक लॉलीपॉप होता है, आप अपने शेयर होल्डर्स को इन बिटवीन बहुत अच्छे जी हमारे रिजल्ट्स हैं तो उस हिसाब में आप इंटरम डिविडेंड्स अनाउंस कर देते हैं, और जब आपका फाइनल ईयर एंड होता है तो उस पर आप क्या करते हैं, आप उनको कह देते हैं कि जी अभी हम जो है दोबारा से री इंजेक्शन कर रहे हैं कैपिटल में, तो आपको आपको शेयर प्राइस की वैल्यू में एडिशन की मद के अंदर आपको काफी ज्यादा गेन मिल जाता है और आप बिजनेस को एक्सपैंड कर पाते हैं, लेकिन आप अपने शेयर होल्डर्स को उस तरह से डिविडेंड नहीं देते। ऑफ कोर्स हाफ ईयर क्लोजिंग के ऊपर अगर आपने इंटरम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड या उसकी जो अमाउंट है वो एक डिफरेंट तरह की होगी कंपैरेटिव टू क्या कहते हैं फाइनल क्लोजिंग के अंदर। और दूसरी बात ये इंटरम डिविडेंड अनाउंस करने के कुछ लीगल और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स भी होते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट डिबेट ऑल टुगेदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़िएगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, ऐसे सर्च करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी, जरा आप कंटिन्यू करें। 255 के मैं पॉइंट्स इनके थी। आपके ग्रुप के लोग काइंडली हैंड अपना रेज कर लें, चाहे उन्होंने प्रेजेंट कर भी दिया है, मरियम, फातिमा और तलहा। ओके जी जरा आप कंटिन्यू करें। ओके मैं 255 पे थी, उसके फर्दर जो पॉइंट्स थे आगे, हाँ ये हो गया था। यहाँ पे कहीं थी in case of the balance sheet of the state of the company's affair as the end of its financial year, in case of profit and loss account or income and expenditure account of the profit or loss surplus or deficit as the case may be for its financial year, in case of statement of changes in financial position or sources and application of funds of a listed company of the changes in the financial position or the sources and application of funds for its financial year. Next, whether or not in their opinion the expenditure incurred during this year was for the purpose of the company's business, and the business conducted, investments made and expenditure incurred during this year were in accordance with the objects of the company, whether or not in their opinion zakat deductible was deducted by the company and deposited in the central zakat fund established under section 7 of that ordinance, where any of the matters referred to is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons for such answer along with the facts to the best of the auditor's information. Next, the federal government may, by general or special order, direct that in the case of all companies generally or such class of description of companies as may be specified in the order, the auditor's report shall also include a statement of such additional matters as may be so specified. The auditors of companies shall be entitled to attend any general meeting of the company and to receive all notices and communication related to it, providing that in the case of listed company, the auditors of a person authorized by him in writing shall be present in general meeting in which the balance sheet and profit and loss account and the auditor's reports are to be considered. Next, if any officer of the company without lawful justification refuses or fails to allow any auditor access to the books and paper in his custody or power, or to give any such information that is possessed by him, or otherwise hinders or obstructs or delays an information that is required by the auditor, that are required for his that are essential to perform his duties or exercise of his power, or fail to give notice of any general meeting to the auditor, he shall be liable to the fine which may extend to 5,000 rupees, and in case of continuing offence to a further fine which may extend
to 100 rupees for every day after which the default continues. The provision of the section shall apply mutatis mutandis to the auditor appointed for audit of the books of accounts of a liquidator. इसमें सर ये जो term use हुई हुई है इसका मतलब है कि by changing those things which need to be changed या alternations to be made according to the similar situation. Next. Reading and inspection of auditor's report. The auditor's report shall be read before the company in a general meeting and shall be open for inspection to any member of the company. Signature on audit report. Only a person appointed as auditor of the company or only a partner in the firm practicing in Pakistan shall sign auditor's report. The report of auditors shall be dated and indicate the place at which it is signed. Next. Section 258, audit of the cost accounts. Where any company or class of company is required under clause E of the subsection 1 to include in its books of accounts the particulars referred to therein, the federal government may direct that an audit of cost accounts of the company shall be conducted by an auditor who is chartered accountant, or a cost and management accounts within the meaning of Cost and Management Accounts Act, and such auditor shall have the same powers and duties and liabilities as an auditor of the company, and such other powers and duties as may be prescribed. Next. Penalty for non-compliance with the provisions by the companies. If a default is complied by a company, a fine which may extend to 50,000 rupees, and in case of continuing the default, to a further fine which may extend to 2,000 rupees for every day after first during which the default continues. Default is complying. अच्छा ये सर वो लिखा हुआ है कि in जो है उस पे इससे related जो है penalty. Next. Penalty for non-compliance with provisions by auditor. Okay. If any auditor's report is made or any document of companies is signed or authenticated otherwise than in conformity with the requirements of sections 155, section 255 or section 257, it is untrue or fails to bring out material facts about the affairs of the company or matters to which it purports to relate, the auditor concerned and the person, if any, other than the auditor who signs the report or signs or authenticates the document, and in case of firm, all partners of the firm shall, if the default is willful, be punishable with a fine which may extend to 100,000 rupees. If auditor's report is made with the intent to profit such auditor or any other person, or to put another person to a disadvantage or a loss, or for a material consideration, the auditor shall, in addition to the penalty provided in the section, be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year. Okay. Power of registrar to call for information, etc. Power of registrar to call for information or explanation. Any information, explanation, or document is necessary with respect to any matter. Registrar may be, by a written order, call upon the company and any of its present or past directors, officer, or auditors to furnish such information और explanation in writing और such documents, और सिर्फ उन directors को नहीं बुला सकते जो office छोड़ चुके हैं 6 years that has ceased to hold the office more than 6 years before the date of the order. It shall be the duty of the company and all the persons who are or have been director of the offices to provide or furnish such information, explanation, or documents to the best of their power. Next. If no such information is provided within the time specified, or if the information or explanation furnished is inadequate, the registrar may by written order call on the company and any such person to produce it before him for inspection of such books and papers as he considered necessary within such time as he specified in order. And it shall be the duty of company and such person to provide produce such books and papers. If any such company or person makes default and
unable to provide the information, to the company shall be liable in respect of each offence to a fine which may extend to 20,000 rupees and to a further fine which may extend to 500 rupees for every day. And every officer of the company who knowingly or willfully authorizes or permits such default is punishable with imprisonment of either term for which may extend to 1 year and shall also be liable to a fine. On application of registrar and upon notice of the company, make an order directing the company to produce such books as in its opinion may reasonably be required by the registrar for his सर ये बीच में चैट्स आ रही हैं वो चेक करूं नहीं आप कंटिन्यू करें कोई मसला नहीं उनको डिस्कस करने में for his investigation. Next, on receipt of such information or explanation or production of any books and paper, the registrar may annex the same or any copy thereof or extract therefrom to the original document submitted to him, and any document so annexed shall be subject to the provisions as to inspection and the taking of the extract and furnishing of the copies to which the original document is subject. If the information or explanation of the book or papers required by the registrar is not furnished within the specified time, or if after perusal of such information or explanation or books or papers, the registrar is of opinion that the document is in question, or further information or explanation or paper discloses an unsatisfactory state of affairs, or that it does not disclose a full or fair statement, the registrar shall, without prejudice to any other provision, report in writing the circumstances of the case to the commission. Okay, he'll forward the case to the commission. Next. Zaryab, the word is per user, okay? Per user, sir, yes, sir. Okay, no problem. Sir. It's okay. Okay, seizure of documents by registrar. The registrar may, after obtaining permission from the magistrate of first class or court, search or seize any such books and papers that the registrar has reasonable ground to believe that books and papers of or relating to any company, मतलब he can जो उसको लग रहा है कि papers मतलब that are not up to the point, such person may be destroyed, okay, mutilated, altered, falsified, or secreted where upon information in his possession or otherwise. For the purpose, the registrar may, after he obtained the permission from magistrate or court, also authorize any officer subordinate to him, not inferior in rank to an assistant registrar, to enter with such assistance as may be required the place where such books and papers are kept, to search that place and to seize such books and papers as he considered necessary. Next. The registrar shall return the books and papers seized under this section as soon as may be, in any case not later than 13 days after such seizure, to the company or to the chief executive or other person whose custody or power they were seized, provided that the commission may, after providing to the company an opportunity to show cause against the order proposed to be made by it, allow the registrar to retain any books and papers for a further period not exceeding 30 days. Provided further that registrar may, before returning the books and paper, take copies of the papers. Okay, every search or seizure made under this section shall be carried out in accordance with the provision of Code of Criminal Procedure relating to the searches or seizures made under that code. Next. Investigation and related matters. Investigation of affairs of companies on application by members of report by registrar. The commission may appoint one or more competent person as an inspector to investigate the affair of any company and to report
in such manner as the Commission may direct. In the case of company having a share capital, on the application of members holding not less than 1/10 of the total voting of powers. In case of company not having a share capital, on the application of not less than 1/10 in number of persons entered on the company's register of members. In case of company not a company on receipt of report under section of, okay, next. ओके फातिमा सर, यहाँ से फातिमा कंटिन्यू करेगी. ठीक हो गया जी. थैंक यू. जी फातिमा, फवाद हमारे पास टाइम कितना है? सर 17 मिनट्स हो गए हैं और 23 मिनट्स हैं. ठीक है, ओके, ऑलराइट. करूँ शुरू? जी जी बिल्कुल. अच्छा. Application by members to be supported by evidence and power to call for security. Commission may ask for good reason to conduct investigation and payment be made of incurring cost for investigation. उसके बाद section 265 में है investigation of companies affair in the other cases. It's discretion of commission to appoint one or more inspectors to carry out the investigation. तो उसके लिए वो जो चीजें देखेंगे, the company by resolution in general meeting or the court by order. Here to investigate the fraudulent intent. Members of a company are guilty of fraud, company forging reasonable return of members, inadequate consideration of shares, complying with practices or laws, risk of solvency. Section 266 में कह रहे हैं inspector to be a court for certain purposes. Power of inspectors ensure the attendants have the needed books and papers produced, examination of witnesses, in case breach observed of any aforementioned clauses which cause penalty under the civil procedure. Next slide, please. So can you just, yes, thank you. Power of inspectors to carry investigation into affairs of associated companies. Section 267. Inspector holds the power to investigate any other body corporate that had relevant time being association. Any person like chief executive of the company. अभी इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए कह रहे हैं कि आपको कमीशन का एक स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा. और उसके बाद थर्ड पॉइंट में एनी कंपनी मैनेजिंग एजेंट और एसोसिएट ऑफ एग्जीक्यूटिव chief executive can be exempted from that अगर तो commission allow कर रहा. Section 268. Duty of officers to assist the inspector. All officers, agents and employees of company are liable to provide all information needed by inspector and to assist him. Breach of compliance will lead to 1 year incarceration and 10,000 rupees fine. ये imprisonment की बात है. और इसी सेक्शन में फिर वो तीसरा पॉइंट ये है कि agents in relation to any company, body corporate or person includes the bankers, legal advisors and auditors of the company. ये भी उसी में exclude ही होंगे, included ही हैं. The expression officer in relation to any company or body corporate include and trustee of the debenture holders of such company or body corporate, and any reference to officers and other employees and agents shall be construed as a reference to past as well as present officers and other employees and agents as their case may be. कि कोई भी association affiliation है जिसमें उनका role आ जाता है in the वो जो business carry out करने में, तो they will be held accountable. Inspector can hold them accountable for anything. Next slide. Inspector's report. Interim reports be submitted to commission but final report be forwarded to commission and make amendments as deemed. पहले forward करने से पहले commission को उसकी interim report भी जाएगी और final submission होगी और फिर उसके बाद वो उसकी एक तरह से finalizing authority वो है, उसके बाद forward की जाएगी to the any person who wants to access the report, make request and make payment first. Any person who has interest in affairs of the company, creditors of the company. Furnish a report copy to the court, forward a copy to the registrar and the shareholders as well. Next slide, please.
prosecution. If report confirms that any person found guilty, even by being in relation with any body or person who is accused and found guilty of offense, commission will a commission with legal advice can prosecute the person, and companies, all officers, agents are liable to give nominated person and assistant to commission. Section 271, power of commission to initiate action against management. The business of the company is being any fraudulent or unlawful purposes. अब इन्होंने वो एक चीदा points दे दिए हैं कि जिन पर ये initiate हो सकता है management के against action. फिर दूसरा, the person concerned to form unauthorized business or have been in affairs of being guilty and misfeasance. ये fraudulent, mistrusty उसमें आता activities हो. To deprive the shareholders of a reasonable return, whatever that you promised and you could not fulfill that, you could not keep your word, तो उसके लिए भी आप पर होगा charge. Members are not given information reasonably they deserve to have camouflage किया आपने कुछ या forgery. Inadequate allocation of shares, non-compliance of prudent commercial practices and sound business principles. Hovering risk of insolvency. कि अगर आपको पता था कि आप your business going to sink, तो फिर भी आपने गलत चीजें, misrepresentation है, तो उस वजह से. Next slide please. Yes, I'm done with this part. Could you just provide good? Yeah, thank you. The commission may apply to the court and court may, after taking such evidence as it may consider necessary, but any order, removal of any director, including the chief executive, managing agent, or the officer of the company. Direct that the directors of the company should carry out such changes in the management or in accounting policies of the company as may be specified in the order, or notwithstanding anything contained in this ordinance or any other law for the time being in force, direct the company to call a meeting of its members to consider such matters as may be specified in order and to take the appropriate remedial action. Or direct that any existing contract which is to determine the detriment of the company or its member or is intended to or does benefit any officer or I think उनका disconnect हो गया है. I cannot hear her. जी जी. Fatma, please unmute करें. We cannot hear you. नहीं सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया. Can't see her here. चलें. Fair enough. हम कौन से सेक्शन पे हैं? 272 है ना ये? जी सर, 271 I think. जी. Hello, am I audible now? Yes, Fatma, please continue. Sorry, something went wrong, so I rejoined. Okay. Direct that any existing contract which is to the, I have covered that part, provided further that any director, including a chief executive, managing agent, or other officer who is removed from office under clause 1, unless the court specified a lesser period, shall not be a director, chief executive, managing agent, or officer of any company for a period of 5 years. ये penalty इन्होंने बताई है कि इसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाएगा अगर कोर्ट उसको कुछ एग्जेम्पशन नहीं करती. No order under this section shall be made unless the director or other officer likely to be affected by such order has been given an opportunity of being heard. कि वो जो accused हैं उनको भी they would be given a chance. Next slide please. Section 272, effect of court's order. On court's order, removal of any director, including chief executive, managing agent, or other officers, such director, managing agent, or other officer shall be deemed to have vacated his office. And if the orders has removed the director, the casual vacancy in the office of director shall be filled in accordance with the relevant provisions contained in the articles of association of the company. And if the court's order has removed from
office of chief executive, the remaining directors shall elect another person to the chief executive, and if the court's order has removed from office all the directors, including the chief executive, a general meeting of company shall be called forth with for electing new directors. वही procedure कि अगर कोर्ट का फैसला आ गया तो उसके बाद जो accused हैं वो उसके बाद किस तरह से आप further चलेंगे. Next slide. Section यहाँ पे रुक जाएं 273. आप. Stop here. जी. We will continue Okay. from 273 in the next class. अच्छा जी, Okay. फवाद साहब कितने सेशंस हमारे पास रह गए हैं बाकी? सर आई बिलीव 2 सेशंस हैं. 2 सेशंस हैं और एक फाइनल का है. That's it. जी सर. ठीक हो गया. अच्छा ये बताएं कि किसी ने जाके, मैंने पहले भी ये सवाल पूछा था, किसी ने बताया नहीं, किसी ने जाके, किसी ने वैसे सर्च करके ही देखा हो EDX के ऊपर जाके जो हार्वर्ड ऑफर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, इससे आपको समझ क्या आई है? वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कोई एम्बिग्विटी है इन बिटवीन या किसी ने कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम. रिजवान अहमद साहब कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा दें. सर ये डिसाइड जी कर सर, लो मैं रिजवान साहब. सर अगर आप परमिशन दें तो जो लोग चाह रहे हैं तो मुझे एक 1 आवर दे दिया जाए, मैं खुद स्लाइड्स पर्सनली प्रिपेयर कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और एक लेक्चर में अगर 1.5 आवर मुझे देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, तो अगर आप परमिशन दें लास्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं खुद से प्रिपेयर करके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नहीं उसका वो भी तो टच मेरे दे पास देता हूँ. भी नहीं एहसन साहब, मेरे पास भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की सारी चीजें प्रिपेयर्ड हैं ऑलरेडी, वो मसला नहीं है. दैट आई ऑलरेडी डिड, क्योंकि सेक्शंस के बाद सबसे ज्यादा रेलेवेंट सेक्शंस हैं आपके जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शुएब ने इन पर्टिकुलर, जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी और अली साहब से भी, उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, शायद अली साहब ने भी आप लोगों को बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम सबसे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस को कवर करें और बाकी चीजें बाद में, ठीक है, बिकॉज तो इनकी रिक्वायरमेंट है एमएस की, उसके अंदर आई डोंट नो समहाउ इट इज इम्पोर्टेंट के ऑर्डिनेंस जो है वो कवर होना चाहिए और बाकी चीजें बात की हैं, वो तो किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक के कॉन्ट्रैक्ट लॉ को पढ़ने के लिए 1.5 घंटा इनफ है. आप एक फीलर देने की बात कर रहे हैं, वहां तक तो हो सकता है, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड जिन लोगों ने नहीं किया हुआ अभी तक, वो अगर वो कोर्स ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वारंटीन के लिए उन्होंने ऑफर किया है, वरना हार्वर्ड तो अपने कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देता ही नहीं है, ठीक है. तो आप लोग अगर कर सकते हैं तो उसमें एनरोल कर लें. एक दफा आपने एनरोल किया होगा तो आप जब मर्जी उसको पूरा कर लेना, आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी. आपके एनरोल करने पे मैं आपसे उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ कि आप एनरोल करें, वो एग्जाम का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, पहली बात. दूसरी बात ये, बुक्स की बात हुई थी 2 किताबों की, कोई बंदा जिसने क्वादी भी पढ़ ली हो, एनीवन? जी वलिया आपने हैंड रेज किया हुआ है. ज़रियाब और तलहा आपने कुछ कहना है? सर काइंडली जरा मुदारबा अकाउंट का बता दें, क्योंकि इकरा ने भी ये क्वेश्चन किया था, आपने कहा था कि मैं बाद में बताता हूँ. हाँ मैं चलो. वो आपको बताऊंगा, वो एक इररेलेवेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, पहले जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो कर लें, मैं आपको बता दूंगा, डोंट जी वरी. ठीक. मुदारबा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है. अच्छा जी जनाब, ज़रियाब आपने कुछ कहना है? ज़रियाब का है सर वो ग्रुप की वजह से किया हुआ था, मैं कर देती हूँ सही. जी 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 जी. तलहा साहब, तलहा ने भी शायद ग्रुप की वजह से किया हुआ है, सर ठीक है. ग्रुप मेंबर्स. जी 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 बुक का कहना जी. था कि वो पढ़ रहे हैं थोड़ी. सर आपने थोड़ी बुक का मुश्किल है. पूछा ना कि वो कोई पढ़ हाँ रहा जी है, हाँ जी. तो वो मैं पढ़ रही हूँ, बीच में छोड़ दी थी, थोड़ी ड्राई सी है सर. बाकी तो सही है. आप समटाइम्स कौन नींद सी आ बुक जाती है पढ़ते पढ़ते. कौन सी बुक ड्राई है जी? थ्योरी ऑफ जस्टिस ड्राई है या फिर कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन ड्राई है? सर दूसरी वाली सर. कौन सी वाली? सर दूसरी वाली? कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक, वो वाली ये हिटमैन. ये बात आपने किसी और को सर नहीं पूरी बतानी. ड्राई नहीं है, बीच बीच में कहीं से बोरिंग हो जाती है. अच्छा सब चलें बीच बीच में से थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है. चलें ठीक है जी. हाँ वलीहा ने अपना हैंड रेज किया हुआ है जी. एनीवन एल्स? किसी और ने पढ़ी हो किताब अभी तक? कोई आधी पढ़ चुका हो? चले आधी पढ़ ली हो किसी ने. जी फातिमा. हाँ जी जी, आधी मशारी पढ़ साहब. लिए जी जी बिलाल. ठीक है जी. आधी जी पढ़ ली है मशारी. वैसे. अच्छा, यू आर एड्रेसिंग हिम. ओके. हाँ हाँ नहीं नहीं, आपकी मैंने सुन ली बात, आपने आधी पढ़ ली. आप कुछ और भी कह रही हैं? जी बताएं. नहीं, बस उस पे कमेंट ही था कि मैं उसको वैसे मैं नहीं पढ़ना चाह रही थी, मुझे लग रहा था कि वो ड्राई होगी, बट व्हाट आई हैव रेड सो फार वो काफ़ी इंफॉर्मेशनल है और एक्सपोजर उसमें आपको काफ़ी मिलता है दैट हाउ बैड एंड द रियल वर्ल्ड इज. तो
I usually don't read the stuff like that, but I find it interesting. It is a true story, of course. It's a real happening. ऐसे हुआ हुआ है. Yes. Anyways, जी मशारी साहब. मशारी साहब कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करें अपना, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही. जी सॉरी सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ मशारी साहब. आप तो गायब हो गए हैं बिल्कुल. नहीं सर मैं तो सर जी जी, आप क्या कह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया था. सर मैंने की हुई है स्टार्ट सर, कोई मतलब लास्ट 2 डेज से, तो चैप्टर 1 जो है वो पढ़ रहा हूँ सर. हो जाएगी इंशाल्लाह सर. आज भी पढ़ूंगा सर. 2 दिन में हो जाएगी. चले बड़ी बात मुझे है. वैसे है ठीक हो सर, गया. मुझे इंटरेस्टिंग लगी है सर. मुझे ऐसे में पढ़ता रहता हूँ सर, लेकिन इंग्लिश में सर 2 आपने मिनट पढ़ी है? लेफ्ट टाइम मीटिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी खुद ब खुद. अच्छा 2 मिनट है. ओके चलें ठीक है. फेयर इनफ. थैंक यू सो Okay, मच. sir. इंशाल्लाह सी यू गाइस अगेन. जो सेक्शंस रह गए, आई इंशाल्लाह लेट सर. यू पीपल नो इंशाल्लाह. एहसन, थैंक यू सो मच. आपने जो बताया समझाया हमें, तो अगर थैंक आप यू